And a very good morning. Students of class 3, kindly take out your English literature notebook. Take out your English literature notebook. Yesterday we have done dictation words. Today we will do dictation sentences. All of you, first of all, I will give you some instructions about the online class. Kindly turn on your videos. Yes, Muhammad Qasim, do you want to ask question? Unmute yourself, please. मैम मेरी तो अलग है मैम, ये मैथ्स की जो आपने ली है। मैथ्स की नहीं बेटा, इट्स इंग्लिश क्लास. इंग्लिश क्लास। It's your English class, okay students? So kindly take out your English literature notebook. जी कासिम. यस यस मैम, बस बस बस। पहले मैथ्स। ओके सो यहाँ पर आज की डेट लिखे. टुडे व्हाट इज द डेट? टुडे इज ट्यूसडे. TUESDAY, Tuesday. And the date is 14/7/20. What is the day today? Today is Tuesday and the date is 14/7/20. See work? And write down with me DIC. Write down with me DIC. With the margin line DIC TA TION, dictation. Then give one finger gap. DIC TATION. Yes, Hamidullah, do you want to ask question? Unmute yourself, please. Dictation. एक्सक्यूज मी मैम। Yes, yes. मैम मैम ये वाली कॉपी। कौन सी वाली बेटा? ये इंग्लिश लिटरेचर की कॉपी निकालें आप सब. आज हम डिक्टेशन सेंटेंसेस करेंगे, ठीक है? मैम ये वाली कॉपी। वेट, लेट मी सी यू. यस यस, दिस वन, जिस पर हमने कल डिक्टेशन सेंटेंस, कौन सा? डिक्टेशन वर्ड्स आपने कल किए थे हमारे साथ? नहीं मैम। नहीं किए थे बेटा. ये साइंस की कॉपी है, ये वाली नहीं. जिसके दोनों पेजेस सेम होना वो वाली इंग्लिश की कॉपी है. दोनों पेजेस पे लाइंस होना वो इंग्लिश की कॉपी है, ठीक है? Okay class, write down with me dictation sentences. SENTENCES. Write down with me dictation sentences. Number 1 is okay. Okay, number 1 is write with the margin line IT8 one finger gap was was
was. Again, one finger gap, write a. It was a. It was a, one finger gap, humid day. H-U-M. H-U-M-I-D. H-U-M-I-D. Hamidullah, which picture, beta? About yesterday work. कल के काम की पिक्चर मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगी, ठीक है? आप उसके लिए एक पेज छोड़ दें और नेक्स्ट पेज पर आ जाएं आप और ये वाला काम करें मेरे साथ, ठीक है? It was a humid day. One finger gap, D-A-Y, day. The meaning of humid is गीला, नम. आज बहुत ज़्यादा जिसमें बारिश हुई और उसके बाद जो वो नमी होती है उसको ह्यूमिड बोलते हैं, ठीक है? It was a humid day. Done, all of you? Now write down number 2. मेरा तो एक ही लाइन में आ गया. अगर आप लोगों का एक ही लाइन में नहीं है तो आप सेकंड लाइन यूज कर सकते हैं, ठीक है? Number 2 is Suleiman. S should be capital. S-U-L-E-M-A-N. Suleiman. S-U-L-M-E-N. M-A-N. S-U-L-E-M-A-N. सुलेमान. क्लास की तुम्हारी इंग्लिश की क्लास नहीं हो गई है. कौन? उसको बोलो जो दूसरी लिंक होती है ना उस पर अब किया कर. मैं अपने मोबाइल से नहीं करना. उसको बोले द नॉलेज स्कूल की जो लिंक होती है उस पर किया कर. सुलेमान. S-U-L-E-M-A-N. सुलेमान. One finger gap, was, W-A-S, was. Suleiman was. W-A-S was. One finger gap, feeling, F-E-E-I-N-G. Suleiman was feeling. Follow the formation, okay? Suleiman was feeling frustrated. If you don't have space, you can go to the next line, okay? F-R-U-S-T-R-A-T-E-D. Suleiman was feeling frustrated. The meaning of frustrated is मायूस. सुलेमान आज बहुत ज़्यादा मायूस महसूस कर रहा था खुद को. Suleiman was feeling frustrated. F-R-U-S-T-R-A-T-E-D. Suleiman was feeling frustrated. Number 3, dictation sentences. Write with the margin line. He, he. Give one finger gap between each word. He felt, F-E-L-T, felt. He felt.
Again, one finger gap. Anxious, ANXIOUS. He felt anxious. The meaning of anxious is fikrmand. Anxious meaning is fikrmand. He felt anxious. One finger gap. And he felt anxious and go to the next line. DIS DISTRESSED. Distressed. De-stressed. The meaning of de-stress is परेशान. वो बहुत ज़्यादा फिक्रमंद और परेशान था. He felt anxious and distressed. Write down number 4. There are 5 dictation sentences in this chapter. Number 1 is it was a humid day. The meaning of humid is nam, गीला. Suleiman was feeling frustrated. सुलेमान आज बहुत ज़्यादा क्या फील कर रहा था? मायूस महसूस कर रहा था खुद को. The meaning of frustrated is मायूस. He felt anxious and distressed. The meaning of anxious is fikrmand and the meaning of distress is परेशान. Now write down number 4 with me. This place, THIS, this. Write down number 4 with me. THIS, this. One finger gap. Write place, PLACE, place. This place, THIS, this. PLACE, place. Now give one finger gap again and write is, is. Again one finger gap and write huge. This place is huge. Huge means बहुत बड़ा. Full stop. This place is huge. ये जगह बहुत बड़ी है. Huge means बड़ी. The last one, number 5 is that TH, write with the margin line, THAT, that. Give one finger gap. That word, WOULD, that word, one finger gap, BEB, that would be awesome. AWSOME, awesome. वो बहुत ज़्यादा क्या होगा? ज़बरदस्त. That would be awesome. The meaning of awesome is zabardast. So this is today's work. Today we have done dictation sentences in the notebook of English literature notebook. First sentence is it was a humid day. Suleiman was feeling frustrated. He felt anxious and distressed. This place is huge. That would be awesome. Now I am going to check your notebooks. Kindly turn on your videos.
Okay. Hibba Sarosh, Zanira, Muhammad Ghazanfar, kindly show me your notebooks if you have done this. Very good, Hibba, Zanira. Show me your notebook. Very good, excellent. Okay. Zainab Shah, very good. Muhammad Tayyab, excellent. Zainab, very good. I don't know who is Mr. Khan, but very good, very nice writing. Okay, Rayan Nazir, Hamidullah, kindly turn on your videos. I want to check your work. Okay. Muiz Shiraz, Muiz, do you want to ask question? Kindly unmute yourself. मैम Yes. मैं इसमें ज्वाइन हुआ हूँ Sorry. मैम मैं इसमें अभी ज्वाइन हुआ हूँ अभी join हुए हो? Why you too late? Why so late? मैम क्लास 4 की ज्वाइन में चला गया था ओहो, चलो कोई बात नहीं, मैं आपको इस काम की पिक्चर भी सेंड कर दूंगी, ठीक है? मैम मेरा होने वाला 4 पे हूँ अच्छा अच्छा, ठीक है. Okay, Tawassul, turn on your video. Okay, no video. Ishmael Tasir, Muhammad Ghazanfar, kindly turn on your videos. I want to check your work. All right, that's good. Nice. Tawassul, kindly show me your work. बीबी ज़ैनब शाह अपनी फ्रेंड को देख के स्माइल पास कर रही है ना? फ्रेंड्स याद आ रही है सबको? ओके तवस्सुल, वेरी गुड, ऑल ऑफ यू, कीप इट अप. ज़ैनब, ओके, आपको मैं ये वाला वर्क सेंड कर दूंगी. हमीदुल्लाह, आपको मैं सेंड कर दूंगी, ठीक है? ईमान फातिमा, काइंडली शो मी योर नोटबुक. ईमान फातिमा, ईमान फातिमा, very good, you have done.